happy, so let's begin with the lesson number 8 of your class 6 English, that is treasure island. So let's begin with this. I'm Jim Hawkins. My father owned an inn. मेरा नाम क्या है? Jim Hawkins है. मेरे father का क्या है? उनका एक inn है. One day an old seaman with a scar came to our inn to stay for a few days. inn क्या होता है? होटल होता है. So क्या हुआ, एक दिन एक ओल्ड सीमैन था जिसके स्कार्स थे, वो आया उनके पास रहने के लिए कुछ दिनों के लिए. बट ही स्टेड मच लॉन्गर एंड इवन स्टॉप पेइंग अस. बट वो बहुत सारे दिनों के लिए रह गया, उसने हमें पैसे देने भी बंद कर दिए. ही वॉज वेरी कमांडिंग एंड सून एवरीवन स्टार्टेड कॉलिंग हिम कैप्टन. वो बहुत ज्यादा कमांडिंग था और सबने जल्दी से उसे कैप्टन बुलाना स्टार्ट कर दिया था. People were afraid of him because he created nuisance after drinking. So लोग उससे बहुत डरते थे क्योंकि वो nuisance create करता था drink करने के बाद. But there was one man who was not afraid of him. But एक man था जो उससे बिल्कुल भी नहीं डरता था. His name was Dr. Livesey. उसका name क्या था? Dr. Livesey था. The captain spent the day watching the sea from the cliff. Captain ने अपना पूरा दिन spend कर दिया था वॉच करते हुए सी को, कहां से? क्लिफ से. with his brass telescope. Whenever he went out, जब भी वो बाहर जाते थे, on his return he would ask us if any sailor passed the road. तो वो हमसे पूछते थे कि क्या कोई sailor पास कर रहा है रोड पे से. At first we thought perhaps was lonely, but later we realized that he was avoiding them. पहले हमने सोचा कि अकेला लोनली थे, बट हमने फिर रियलाइज किया कि वो हमें अवॉइड कर रहे हैं. एंड वन डे अ सेलर डिड अराइव. फिर एक दिन एक सेलर अराइव हुआ. हिज नेम वाज ब्लैक डॉग. उसका नेम था ब्लैक डॉग. बोथ मैन सेट टुगेदर एंड टॉक्ड ओवर समथिंग. दोनों आदमी एक साथ बैठे और किसी बारे में बात करने लगे. देन दे हैड अ हीटेड आर्गुमेंट एंड दे फॉट विद देयर स्वॉर्ड्स. फिर उनको एक हीटेड आर्गुमेंट हो गया, फिर वो अपनी तलवारों के साथ स्वॉर्ड्स के साथ लड़ने लगे. देन द मैन डैश्ड आउट ऑफ द बोट ब्लीडिंग. फिर एकदम वो ब्लीड करता हुआ बाहर निकला. फ्लीइंग फॉर हिज लाइफ. अपनी लाइफ बचाने के लिए. फ्लीइंग मतलब escaping by running away, escaping especially because of fear. After the sailor's visit, the captain started drinking a lot and fell ill. So जब जैसे सेलर आया, सेलर की विजिट के बाद कैप्टन ने ज्यादा ड्रिंक करने स्टार्ट कर दिया और बीमार हो गए. While drunk, he told me that some villains were after his life, so they would give him the black spot. जब उन्होंने ड्रंक कर लिया तो उन्होंने बताया कि कुछ सेलर्स उनकी लाइफ के पीछे हैं, कुछ विलेंस उनकी लाइफ के पीछे हैं, सॉरी, और वो उन्हें क्या देंगे? ब्लैक स्पॉट देंगे. So now Jim, he said gasping. तो उन्होंने बोला Jim, he said gasping मतलब taking a short quick breath. सांस लेते हुए जल्दी जल्दी बोला. Through the mouth, I don't escape before they give me the black spot. Remember what I tell you. जब मैं escape ना I don't escape before they give me, जब तक वो मेरे को black spot नहीं देंगे. तो याद रखना मैंने तुम्हें क्या बोला था? The black spot is a signal and they give it to someone they are about to kill. Black spot होता है एक सिग्नल जो उसको देते हैं जो उसको मारने वाले हैं. Black dog and villains he works for are after the old chest in my room. So क्या थे जो black dog और उसके villains he works for, जिसके लिए black villains work करते हैं, और after the old chest. वो किसके पीछे था? old chest के पीछे in my room. If anything happens to me, अगर मुझे कुछ होता है, you must go to the doctor Livesey and tell him to get and help. He can and come here. So जब भी मुझे कुछ होता है तो तुम लिवसी डॉक्टर के पास जाना और उनको बताना कि हमें हेल्प चाहिए और उनसे बोलना यहाँ आओ. He will be able to catch the whole lot here. वो पकड़ लेंगे हर चीज यहाँ पे. All the Flint's man. I'm the only man alive who knows where Flint buried. तो मैं ही एक मैन हूँ जो जिंदा हूँ जिसको पता है कि फ्लिंट्स कहाँ बरीड है. हिस्ट्री जब बिफोर हिज डाइड मतलब फ्रेजर है. सो अ फ्यू डेज लेटर व्हाट ही फियर्ड हैपेंड. थोड़े दिन बाद जिसका उसको डर था वही हुआ. अ ब्लाइंड मैन केम एंड हैंडेड द कैप्टन समथिंग एंड सेड नाउ दैट्स डन एंड लेफ्ट. सो एक ब्लाइंड मैन, एक अंधा आदमी आता है, वो नाउ दैट्स कुछ देता है, हैंडेड करता है कैप्टन को और बोलता है नाउ दैट्स डन एंड लेफ्ट. So the captain read it and jumped up, cry out. एकदम कैप्टन ने read करा, एकदम चिल्लाया वो. 10 o'clock. I have 6 hours yet. मेरे पास अभी 6 घंटे हैं. Then he tripped, fell flat on his face and died. फिर एकदम he tripped, then he tripped एकदम trip हो गया, fell flat on his face and died. वो मर गया. We saw a little round paper. हमने एक little round paper देखा, black on one side lying on the floor. एक साइड से ब्लैक था जो फ्लोर पे पड़ा हुआ था.
It said you have till 10 tonight. It was black spot. वो तुम्हारे पास रात के 10 बजे तक का टाइम है, वो क्या था? ब्लैक स्पॉट है. My father was not alive. मेरे फादर अलाइव नहीं थे. My mother and I knew we were in danger and we had to leave the inn before the villains came. तो मेरी मदर और मुझे पता था हम डेंजर में हैं, तो हमें इन छोड़ना पड़ेगा जब तक विलेंस आते हैं यहाँ पे. Hurriedly, my mother and I searched the captain's body to find the key to his chest. तो हमने एकदम की ढूंढने की कोशिश करी कैप्टन की बॉडी पे. We ran upstairs, हम ऊपर भागे गए. Open the chest in order. हमने चेस्ट खोली ऑर्डर में. And all that only take amount of money and take only that amount of money which he owed to us. हमने उतना ही मनी लिया जितना हमें वो ओ करता था. While my mother was still counting the money, he heard the blind man step. एकदम से जैसे उन्होंने काउंट करी थी मैंने, एकदम उन्होंने ब्लाइंड मैन का टैप सुना. I will take what I have. She said springing to her feet. उन्होंने बोला मैं लूंगी जो मेरे पे होगा. And I will take this in place of rest. और मैं ले लूंगी सब की जगह पे. I added, picking up the shabby little packet and I followed her. Shabby वाला इन बैड कंडीशन लिटिल पैकेट को उठाया और मैंने उनको फॉलो करा. We hurried down the stairs, scratched out of the house and fled. हम मतलब डाउन द स्टेयर्स गए, हाउस से बाहर निकला, फ्लैट कर गए. वी रैन फास्ट एंड माय मदर फेंटेड. हम तेज भागने लगे, मेरी मदर बेहोश हो गई. आई ड्रैग्ड हर टू द बैंक एंड वी हिड अंडर अ ब्रिज. मैं उन्हें किनारे तक, बैंक तक ले गया, रिवर के किनारे तक, और ब्रिज के नीचे हम छुप गए. Soon 7 or 8 men including the blind man arrived. फिर 7 और 8 men आए, ब्लाइंड मैन को इंक्लूड करते हुए. Then there was chaos. The man searched the whole house. तो उन लोगों ने पूरे घर को सर्च करा. And when not finding what they wanted, smashed everything in anger. जब वो जो चाहते थे वो उन्हें नहीं मिला तो हर चीज उन्होंने तोड़ फोड़ दी गुस्से में. Then they started quarreling. फिर उन्होंने लड़ाई करना स्टार्ट करा. But when they heard the horses of the revenue man, जब उन्होंने horses सुने revenue man के, they panicked and fled in different directions. वो पैनिक कर गए, couldn't think clearly because of fear. वो different directions में चले गए. The revenue officers tried to chase them but failed. Revenue officers ने उन्हें try करा chase करने का और fail हो गए. Then they returned to the inn and saw everything smashed and broken. फिर वो inn में आए, उन्होंने हर चीज टूटी हुई देखी, broken देखी, but except for the captain's money bag and some money from the money box, nothing was taken. So but except for captain's money bag, खाली money का bag और some money from the money box, कुछ ही money गया था money box से, और but box nothing was taken, और कुछ नहीं लेके गए वो. What are they after? किसके पीछे थे? So chief superintendent officer Mr. Danks asked. Mr. Danks ने पूछा ये किस चीज के पीछे थे? I think I have what they were looking for in my pocket. मुझे पता, I think मुझ पे है वो जो ये चीज ढूंढ रहे थे मेरी पॉकेट में. And I must get it safety perhaps to Dr. Livesey. तो मुझे सेफ्टी के लिए डॉक्टर लिप्से के पास जाना है. The man nodded cheerfully and we set out. हम मैन ने cheerfully नोट करा और हम चले गए. We found Dr. Livesey. हमने डॉक्टर लिप्सी को ढूंढा स्क्वायर्स हाउस में. Superintendent Mr. Dance told him the whole story. Superintendent Mr. Dance ने सारी स्टोरी उनको बताई. After the officer left, जैसे ऑफिसर ने लेफ्ट करा, the gentleman continued to talk. Gentleman ने कंटिन्यू करा बात करने के लिए. While I listened, Flint was the most bloodthirsty pirate. Flint कौन था? Flint जो था most bloodthirsty pirate था. That had very sailed and everyone feared him. और हर कोई इससे डरता था. He had looted ships. उसने लूट करी थी ships में and collected so much gold that there must have been left a treasure hidden somewhere. और इतना लूट करा कि कोई ना कहीं treasure hidden होगा. Maybe the packet had the clue about where he hoard was buried. So क्या maybe उस पैकेट में होगी वहाँ कहाँ पे treasure buried है, hoard मतलब collection of stock of money buried है. So this was the doctor's idea and the squire jumped up excitedly. Doctor का idea तो squire ने excitedly jump करा. If that has a clue in it, I tell you I will get myself a ship in Bristol and take you and Hawkins and find that gold. So मैं अगर वहाँ ये clue होगा मैं तुमसे बोल दूँगा मैं ship लेके आऊँगा और Bristol लेके जाऊँगा तो तुम्हें और Hawkins को and find that you and Hawkins and find the gold. और हम gold ढूंढेंगे even if it takes me a full year. अगर मुझे पूरा साल भी लग जाए इसे ढूंढने में तो. The doctor laughed. Doctor हंसने लगा. Then he cut the bundle open carefully. कट करा उस बंडल को ध्यान से खोला. He had two things, a book and a sealed paper. उसमें दो चीजें थी, एक बुक थी और एक sealed paper. In the book there was strange of set of entries that we puzzled over.
वहाँ पे स्ट्रेंज एंट्रीज थी जिसमें हम पजल हो गए थे. एंट्रीज वर अबाउट द सम्स ऑफ मनी. एंट्रीज थी सम्स ऑफ मनी की with different number of crosses next to each. The date showed that the entries covered nearly 20 years. Date show करती है कि entries में 20 years थे. The squire suddenly felt that we had found Flint's account book. तो हमें लगता है squire ने suddenly feel करा कि हम पे Flint's की account book है. So then we turned our attention to the seal paper. हमने attention turn करी किस पे? Seal paper पे. The doctor carefully broke the seals. Doctor ने से broke करी carefully seals, and we saw that it was a map of an island. उस पे एक map था एक island का, with the latitude and the longitude and 3 crosses at the different spots. Next to cross in the southwest, 2 cross थे southwest में, and it was written a bulk of treasure hidden here. After reading the clue, the squire got very excited. Clues पढ़ने के बाद squire बहुत ज़्यादा excited हो गया and jumped to his feet और अपनी feet पे jump करा. Tomorrow I will start the Bristol. हम कल Bristol start करेंगे and the doctor will give us the practice at once. और doctor हमें practice कर देंगे and in there no in 3 no 2 no 1 will in and in that 2 weeks no 10 times we will have the best ship and young Hawkins. अब एक बेस्ट शिप है, यंग हॉकिंस है एंड यंग हॉकिंस विल कम एज अ कैबिन बॉय. यंग हॉकिन कैसे आएगा? कैबिन बॉय की तरह आएगा. ही कंटिन्यूड इन हिज एक्साइटिंग टोन. एक्साइटिंग टोन में उन्होंने बोला फॉर क्वाइट सम टाइम. द डॉक्टर्स लिसन पेशेंटली. डॉक्टर ने पेशेंटली सुना एंड फाइनली ब्रोक इन. वी शैल टेक सम ऑफ आवर ओल्ड मैन. हमें कुछ अपने ओल्ड मैन भी लेने चाहिए along with us whom we can trust, जिनको हम ट्रस्ट कर सकते हैं. बट आई मस्ट वांट यू टू मेंटेन कंप्लीट सीक्रेसी इन दिस. और मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि कंप्लीट सीक्रेसी रखना इसमें. यू अंडरस्टैंड? स्क्वायर ट्रेलेवने नोटेड. स्क्वायर ट्रेलेवने ने नोट करा. आई विल बी साइलेंट एज अ ग्रेव. मैं ग्रेव की तरह साइलेंट रहूंगा. बट गेटिंग रेडी टू सेल टुक मच लॉन्गर देन वी हैड इमेजिन्ड. So simplified from R.L. Stevenson's Treasure Islands. Now let's solve the exercises of this lesson. Think and answer. Tick the correct option. The sailor's name was Jim Hawkins, Black Dog, Captain. None of these. Sailor का name क्या था? The sailor name was Jim Hawkins. After the sailor's visit, the captain started drinking a lot. Who knows about the treasure? किसको पता था treasure के बारे में? Captain, sorry. The dash tried to chase them but failed. The blind man, who was the chief superintendent officer. Now let's solve the true false. First one, the captain belonged to a group of pilots. True. The captain was the leader of the group. False. The pirates were after the captain's life because he had stolen the treasure. True. The captain had the map of an island where the treasure was hidden. True. The blind man was the messenger of the pirates. True. Jim went to the doctor to give him the captain's chest. Now answer the following questions. What does the captain instruct him to seek help from in case something happens to him? The captain instructs him to seek help from the doctor if anything happened to him. What occurred a few days after the captain shared his fear with Jim? After a few days later, a blind man came to the inn and gave the captain the letter, and which frightened him to death. How did people start to refer to the old seaman and why? People started to refer to the old seaman as the captain because of the commanding presence. He was the captain of his command because of his commanding presence and because of his commanding presence and sea stories. Now, did the captain die of shock or over drinking? Why do you think so? The captain died of shock because the blind man came and gave him the letter that he had the time till 10 o'clock. Did the squire get excited easily? Why do you think so? Yes, the squire get excited easily because they get the
they get to know where the treasure is hidden. So they get the map of the treasure. Now let's solve them. Write the name against the statement in each example. Now write the name against the statement as in the examples. He was injured by the captain, black dog. He gave the captain black spot, the blind man. He took away a bag from the captain's chest, Jim Hawkins. He was the chief of the pirates, Long John Silver. He wanted to buy a ship to sail, the Squire. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.